Hi guys, so welcome to our class of statistical physics. तो क्या देख रहे थे हम फर्स्ट? पहले तो पिछली बार डिफाइन किया था कि व्हाट इज द मल्टीप्लिसिटी फंक्शन, राइट? इसको हम जीएनएस बोलते थे, दिस मल्टीप्लिसिटी फंक्शन जीएनएस. So the multiplicity function, it defines you the number of accessible states. I mean, for a given configuration, for a binary level system के केस में हमने देखा कि the multiplicity function is defined as ncn1. So it just gives you the number of ways you can choose n1 out of n particles, right? So the choosing can be done by which shows exactly how the multiplicity function is defined. So the GNS is basically, I told you that n1 is basically n2 by s, and n2 is n2 minus s, where 2s is associated with the basically spin axis, right? That's what the way we were interested to write this multiplicity function. So equation 1 basically is a function of ns for very large n, right? जब n like is a basically your statistical limit, right? जब n बहुत ज़्यादा है, then we have shown that, right, the GNS is turns out to be a Gaussian probability distribution function. So this is basically your Gaussian distribution function, Gaussian distribution, right? This is your Gaussian distribution function, which is sharply peak around s equal to 0, right? Because as you move away from s, you will see that how the function behaves. So now the first task for first question I put before you is just find out the exact form of g and 0. That's the your question first is. How do you do that? We'll just normalize by just assuming integrating over all space, right? You can find out g and 0. The answer is this will turn out to be something like this. So you have to find it out. So the if you want to see the behavior कैसा दिखेगा GNS का, right? GNS as a function of s plot कर दें, because s is an important parameter, right? Because g is a function of both n and s and is a number of spins that you remember, right? इसका भी function है और spin axis का भी function है. But हमारा idea क्या है कि we want to plot it as a function of spin axis, because that's the interesting scenario. Because क्या है कि the spin axis is a parameter which gives you the basically the out of equilibrium scenario. It's just that कि वो आपको यही बताएगा कि when s equal to 0 is the most probable configuration, because वहाँ पर अप डाउन का सिमेट्री एकदम एग्जिस्ट करता है s equal to 0 पे, right? As for higher values of s, you will give the less probable configurations, right? समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे बाइनरी लेवल सिस्टम था अप एंड डाउन का, इसको मैंने क्या लिखा था कि राइट, हाउ कुड यू राइट इट डाउन? You could write down up down and down down, right? ऐसे करके लिख सकते थे, but with यहाँ एक 2 का फैक्टर आता था, right? So you see that this configuration is twice as probable than these two, right? That's what the, तो देख रहे हो ना, यहाँ कोई spin axis नहीं है. You see, so when spin axis is 0, this function is sharply peaked. That's what the motto and logic behind this is, right? So अभी क्या है कि आज का केस है कि वी वांट टू इंट्रोड्यूस फ्यू एवरेज वैल्यूज, हाउ यू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यूज फॉर ए in terms of statistical physics, right? That's the very important question and that's the fundamental question. तो कभी एवरेज वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं? तो द एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन f taken over a probability distribution at ps is defined as something like this. The average of function is fsps, right? That's the way this ये definition आपका हर कहीं काम करेगा. It's not over here. You are going to be in quantum mechanics. We will also see similar sort of distributions functions, or how are we going to calculate the averages for defined wave functions and things like that. तो probability वहाँ पर भी आपको निकालना है, averages वहाँ पर भी निकालना है. It's just that average energies and so on, things like function f could be a general function. वो हम देखेंगे कि क्या हो सकता है. बट द कंडीशन इज दैट द पीएस शुड बी प्रोबेबिलिटी फंक्शन. तो उसका क्या मतलब है कि अगर ये एस का फंक्शन है तो सम ओवरऑल इस यूनिटी देना चाहिए, राइट? दैट्स द आइडिया. तो अभी हाउ कुड यू कंस्ट्रक्ट अ लीगल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? ये आइडिया ना कि अभी पहले बात तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? इस एवरेज को निकालने के लिए हमें चाहिए एक फंक्शन एफ एस और हमें चाहिए एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पी एस. तो अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पी एस कैसे हम फाइंड करेंगे, राइट? तो पहले देख लेते हैं कि हमने बाइनरी सिस्टम्स को स्टडी किया है,
And binary systems में हमने देखा two level system में like how the two level distribution, I mean how the two level system is governed to give us the binomial distribution function, right? तो हमने देखा जो GNS था multiplicity function, if you just sum over all s you get 2 to power n, right? Now for a function to be a probability distribution function, sum over s ps should be 1, right? That's the probability. So अगर इसको 2 to power n से divide कर दें तो this could be a probability distribution function, right? जो कि equation 6 में दिया गया है. So now for further calculating further averages, we could take this binomial distribution function divided by 2 to power n, right? ये idea है. तो अभी मैं एक question you can solve it something like that for a given function. Let's say a function which goes to the proportionality of s square, right? fs s square है तो average s square find out करना है with this with respect to pns, right? और pns क्या है, हमने pns construct किया is like gns divided by 2 to power n. तो अभी gns, you know gns what is, we know what is a basically n much greater than one limit में gns क्या आता है, right? It is something like it goes to exponential minus 2s square by n, right? With some normalization. Normalization यहाँ पे रखा हुआ है, which I said you calculate it, but मैंने यहाँ पे रख दिया है normalization, right? You can find out this answer, right? तो अभी ये normalization है, ये आपका पूरा probability distribution function है. तो s square का वैल्यू अभी आप इसमें प्लग कर दोगे, pns की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दो 9 से क्वेश्चन 7 में, यहाँ पे रख दिया तो ये बन गया पूरा, राइट? और अभी नाउ जस्ट यू वांट टू सॉल्व दिस, राइट? अभी इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, राइट? यू कैन सी दैट बेसिकली दीज आर द स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स. तो ये टेबल ऑफ इंटीग्रल्स में आप जाके कहीं भी गूगल सर्च कर लो, यू विल फाइंड आउट दैट द गाउसियन इंटीग्रल्स. तो वो अभी तो नहीं डिस्कस कर रहा मैं, मोस्टली मैथमेटिकल फिजिक्स में देखते हैं कहाँ पे डिस्कस करेंगे. राइट नाउ वी यू हैव टेक इट, आई मीन मैं इसका दूंगा और यू व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर इट, यू हैव टू टेक इट. तो क्या है कि अगर देखो ना, ये मैं कुछ वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन करूंगा फॉर गुड सेक, आई मीन गुड सेक इन द सेंस कि तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा एंड देन यू कैन कैलकुलेट थिंग्स. सो x की वैल्यू ये रख दो, x स्क्वायर ये हो जाएगी और dx ये बन जाएगा, राइट? ये थिंग्स क्लियर है. नाउ यू यूज दिस इज बेसिकली योर स्टैंडर्ड गाउसियन. So exponential with all minus infinity to infinity, exponential minus alpha s square. This is your standard Gaussian distribution function. Now you plug all these substitution from here to here to the above equation in this equation 10, right? This is very important exercise for you because ये ऐसा है कि आपको हर कहीं मिलने वाला है. Like nowhere in the statistical physics class you are going to avoid this problem itself. Like यही प्रॉब्लम रिपीट हो के मिलेगी आपको बहुत जगह पे. तो अभी ये सब रख दोगे तो देन यू कैन सी दैट एस स्क्वायर इज टर्न आउट टू बी द n by 4. तो 4 में अगर इधर लिख दूं तो 2s स्क्वायर टर्न्स आउट बी प्रोपोर्शनल टू n. अभी मैं अगर इसका स्क्वायर रूट ले लूं which will give you the root mean square spin excess, so that goes like n to power half. This is a very important result, that root mean square is proportional to square root of n, where n is the number of particles, right? So this is a very important question. You have to take care of solving it and put some effort, time to understand this, right? This is very important. So abhi let's look at one more concept that अभी तक तो हमने स्पिन चेन को डिफाइन कर दिया, राइट? सिस्टम को कैसे डिफाइन किया था, इफ यू रिमेंबर, राइट? सिस्टम को कैसे हमने बोला कि n स्पिन्स हैं ऐसे करके, और स्पिन्स का प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर इन द बाइनरी स्टेट, राइट? तो लाइक इट्स अ काइंड ऑफ आइजिंग सॉर्ट ऑफ स्पिन्स हैं. तो इधर या तो +1 जाएंगी या तो -1 जाएंगी. दिस सॉर्ट ऑफ सिनेरियो में एग्जिस्ट कर रही थी. तो बट ईच स्पिन you know they carry a magnetic moment, and but their interaction with the magnetic field is not defined. For example, if this is my mu and this is my b, so what will be the interaction energy of when the spin is going to interact with this b, और इस b का असर क्या होगा सिस्टम के ऊपर? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? कि अभी तक तो हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं डिफाइन किया, राइट? अगर मैग्नेटिक फील्ड रख दिया देन हाउ द सिस्टम इज गोइंग टू इंटरैक्ट विद दिस मैग्नेटिक फील्ड. तो दिस इज योर वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल. आई मीन कहीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आई मीन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यू कैन फाइंड आउट दिस एक्सप्रेशन दैट एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल विद द फील्ड इज समथिंग लाइक प्रोपोर्शनल टू m dot b. इससे
go to any standard book, you will find out. I mean, right now this is not my part to derive it, but that's the standard, right? M dot B. So अभी but this is for single magnet, right? अगर अभी मैं बोलूं कि यहाँ पर n magnet होंगे तो क्या करोगे? तो then you have to sum over all n magnets, right? And when you B तो यहाँ पर like you can take dot product something like this, where ऐसे लिख सकते हो, or when you will sum over I equal to 1 to m in terms of spin excess, it will give you 2sm, right? तो ये basically आपकी एनर्जी मिल जाएगी minus 2smb. I mean, I'm not putting much effort right now to explain this, but इतना सा new concept ये आपको लेना है कि m dot b is the interaction energy when you put a magnetic moment or maybe a spin in the magnetic field B. So the first, तो अभी अगर पहला हैमिल्टोनियन आपका इस टाइप का था SISJ, right, where basically you have a nearest neighbor interaction. In the अगर spin interact कर रहा है तो basically अगला SI dot B. तो ये basically next term आप सोच सकते हो इसके साथ, right? Or maybe site index भी put कर सकते हो, but that's not required. So let's not put I here. So S dot B. So this is going to be the next term in your Hamiltonian, but let's wind it here for today's things और फिर आगे देखते हैं. Thank you.